बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा हैदर जान और आज अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू एक नए प्रोग्राम में आप लोग के साथ मैं हाजिर हूँ। रमजान ट्रांसमिशन एपिसोड 6 आज मैं आप लोग के सामने मौजूद और आज मैंने जरूरी समझा कि थोड़ा सा रूटीन से हट के थोड़ा सा कुछ ऐसे मौजूआत पे हम बात करें जो हम डे टू डे लाइफ रूटीन में कुछ ऐसी इश्यूज फेस करते हैं जिसका हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी लाइफ जो है वो किस तरफ जा रही है। हम इतने स्ट्रेस एनवायरनमेंट में लाइफ इतने स्ट्रेसली आजकल चल रही है। पूरे मुल्क के अगर हम हालात देखें फिर अपनी पर्सनल लाइफ देखें तो ऐसे स्ट्रेस हालात चल रहे हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा था, किसी को गोल्स नहीं क्लियर, किसी को एम नहीं क्लियर कि उसके जिंदगी का मकसद क्या है। वो ये काम कर रहे तो क्यों कर रहे हैं और ये काम करके उसको क्या मिलेगा। तो इस बात को जरूरी समझते हुए आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो यही है कि अगर जिंदगी में आप किसी फेलियर का सामना करना पड़े, जिंदगी में किसी स्टेज पे आप फेल हो गए तो उस फेलियर को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो इन हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे एंड आई हैव रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्पेशल गेस्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस as I have requested to Sayyida Rubab. Assalamu alaikum, madam, and thank you so much for joining. अच्छा, I'm sorry, I'm sorry, respected madam, आपकी तरफ से आवाज जो है I think so a bit connectivity issue या whatsoever की तरफ से आवाज जो है वो कट गई है। If I may request you कि आप थोड़ा सा साइन आउट होके साइन इन हो जाए दोबारा तो होप इशू जो है वो सेटल हो जाएगा। थोड़ा स्क्रीन से आउट होके दोबारा इन हो जाए तो द इशू विल बी परफेक्टली, इट विल बी परफेक्टली ओके, इट विल वर्क देन। अच्छा, आज जैसे कि मैंने कह दिया स्टार्ट में कि आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में अगर फेलियर का सामना करना पड़े तो इसको कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और फिर जाकर डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर का आपस में क्या कनेक्शन है। तो इन सारी चीजों पे आज मैंने जरूरी समझा कि मैं बात करूं। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। इफ आई मैं आस्क यू फर्स्टली कि काइंडली थोड़ा सा आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं चाह रहा हूं कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको आपके प्रोफाइल का पता चले कि आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो कौन है। जी I work with some rehab. I work with special need children as well. Then lately I have joined this organization. It's a rehab, Healing Doors. I am working with them as a therapist and NLP master practitioner. I did my NLP practitioner and NLP master prac as well. Okay, respected, if we are in Ramzan transmission, so I will be asking you how Ramzan is going on at your end and how people are responding to the Ramzan right as of today, as almost तकरीबन 8-10 रोजे गुजर गए और हमारा जो नॉर्मल माइंड सेट है वो यही है कि हम लड़ते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। रमजान कैसे गुजर रहा है? Rubab, respected Rubab, once again, it is a voice issue at your end. If you can please fix it, it is a barrier and a voice, and I think so it's because of internet connectivity issue. If you can change the a bit, I don't know how it will be managed at your end. As, once again, I would request.
आज एक दफा फिर जो हमारी गेस्ट है सैयद रुबाब, as she introduced herself, and she said that she is working at a multi. Acha, she is joined again. Thank you so much. You can continue. I'm sorry, I don't know what's the issue. You can continue. It's okay. It's perfectly fine. हम इंसान इसी तरह कभी कभी फेल हो जाते हैं जिस तरह this system is failing, so we don't need to panic and we don't need to be disturbed by these things because life is not perfect package all the time. Then if I ask जो आईटी है उसके साथ तो हम खेल लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, रिस्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर लाइफ में फेलियर हम हो गए, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो अगर फिर फेलियर को कैसे मैनेज कर सकते, कैसे कोप कर सकते हैं? आपकी भी आवाज कट रही है, जितना मुझे समझ आया यू वांट टू आस्क के हम फेलियर्स को कैसे कोप कर सकते हैं? यस 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 यस, वेरी बेसिक कंसर्न जो फेलियर का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने माशरे के तौर पे भी हर चीज को हार और जीत का, हाई अचीवर्स 90% फर्स्ट ग्रेड, वी नेवर लुक इनटू द सिचुएशन व्हाट वी if even we are failed in some situation, what we can learn about it. ऐसा तो नहीं होता ना कि सब कुछ फेल हो गया, हम पेपर अटेम्प्ट किया है, एटलीस्ट वी नो. सबसे इंपॉर्टेंट तो हम ये लर्न कर रहे होते हैं कि अगर हम फेल हो गए हैं तो हाउ टू फेस द फेलियर. यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है. दुनिया भर में सबसे ज्यादा मसला और सुसाइडल अटेम्प्ट और डिप्रेशन ये आता है I'm sorry. Once again, there is due to some connectivity issue. There is a voice barrier, and I think so we have lost from the screen. Acha, if I request, तो आज जो है एक दफा फिर मैं आप लोगों को बोलूं जो देखने वाले हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर लाइफ में, अच्छा मैडम वी हैव लॉस्ट यू, थैंक यू सो मच फॉर रिजॉइनिंग. आप अपनी बात जो है जो लास्ट 10 सेकंड है काइंडली उसको कंप्लीट करें. क्या आपको मेरी आवाज आ रही? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Are you with us? I think so. There's a serious voice issue. And as respected Sayyid Rubab said that these are the IT related issues and it can be managed one way or the other way. And we have asked her that yes, these are the IT issues, connectivity issue whatsoever. But if you face such kind of failure in our life, then how can we handle and how can we cope with those failures? अच्छा, आवाज आपकी वो बिल्कुल कट रही है. एंड इफ अगर आप हमारे साथ लाइन पे है तो मैं अच्छा, जितने भी देखने वाले हैं और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे मैं वी शुड नॉट वेट फर्दर मोर. मैं आई वुड रिक्वेस्ट टू मैं अच्छा मैडम, आर यू विद अस राइट नाउ?
अच्छा, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। मैं जितनी भी आज जो सवालात है, हाउ टू कोप विद फेलियर, हाउ टू कोप फेलियर इन लाइफ, एंड जो डिप्रेशन और एंजाइटी है उसको फेलियर के साथ क्या लिंक है, डायरेक्ट लिंक है या नहीं है, और फिर जाके एंड में व्हाट विल बी द मैसेज फ्रॉम द एक्सपर्ट जो आज हमारे गेस्ट है। आई वुड रिक्वेस्ट शो के वो थ्रू वॉइस, थ्रू वीडियो जो है इन सवालात का हमें जवाब दें, और मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करके एंड विल लव के आप सारे देखने वाले जो है, जो 10-11 मिनट्स के बाद का ड्यूरेशन है, उसमें आप जो है मैडम के रिस्पॉन्स जो है वो सुने, समझे और अपना फीडबैक दे, और उनकी जो कीमती राय है उससे मुस्तफीद हो जाए। वी आर सॉरी टुडे ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू वी आर अनेबल कि हम लाइव आ जाए। हावेवर जो भी सवालात है उस पर मैडम से मैं थ्रू वीडियो लेके विल होपफुली अपलोड इट लेटर आफ्टर 2-3 घंटे बाद। मुझे साहबजादा हैदर जान को दीजिए इजाजत, और मेरे इस एंड के बाद आप लोग मैडम का रिस्पांस जो है अगली वीडियो में, जो कि होपफुली नेक्स्ट 4-5 आवर्स में अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल आप उसमें देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum guys, I'm really sorry I was unable to speak live due to technical issues. I would like to introduce myself. I'm Saida Robab. I am therapist and NLP master practitioner. I am into this field from last 10 years. I started my career from Dr. Sadakat Clinic, Willingways. Then I studied counseling and psychotherapy. I provided counseling and psychotherapy to different institution like Piast University and some other institution. Then I worked with special need children as well. Meanwhile, I did my NLP practitioner and NLP master practitioner. After that, I started providing life coaching and counseling and therapy to my different clients. I do provide consultancy, and I lately joined a rehab center. Its name is Healing Door Rehab. First, I would like to talk about what is failure. Whatever we are trying to achieve, whatever we set as a goal, it could be some degree, it could be some business plan, it could be anything, and we couldn't get the result how we want to, or how we expect to do get it. इसमें हमें ये समझना है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती है। हम कोई एक चीज़ की एफर्ट डालना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और वो फ़ौरन फर्स्ट अटैम्प्ट पे हमें अचीव कर लेना, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होता है। और जब ये नहीं होता है तो हम बहुत मायूस परेशान होते हैं। देयर आर सम पीपल हु गो into stress, anxiety and severe depression because of their failure. First of all, we have to understand this thing that we are human, we are not machines, we can't behave perfectly. नंबर टू, वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस थिंग कि जो अटेम्प्ट हमने की है किसी भी काम को करने की, उस अटेम्प्ट और उस एक्सपीरियंस में हमने क्या सीखा है। इफ़ नथिंग, हमने कुछ नहीं सीखा, तो कम अज़ कम हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू एक्सेप्ट और हाउ टू फेस फेलियर, नंबर वन। बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट्स और सुसाइडल केसेस हमारे सामने आते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट पीपल कांट फेस देयर फेलियर, बिकॉज दे टेक इट सो personal that they can't handle the grief and the anxiety of this thing. After that, we have to check, is it a lack of, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टर्म्स और सिचुएशंस में अपने आप से डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं. समटाइम पीपल से दैट इज इट lack of ability, or it's my bad luck, or I couldn't do enough effort, or we start blaming some other person, some other problem or situation for our failure. Out of these 4-5 things, if I think so, we look at this first of all कि हमने जितना टफ या जैसा गोल सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने कितनी एफर्ट डाली है, कितनी प्रिपरेशन की है,
और हम इसके साथ क्या क्या सीख सकते हैं, ना कि ये कहें कि ये गुड लक है या बैड लक है। अगर हम गुड लक का नाम देते हैं तो इट मीन्स, अगर जब हम कभी सक्सेसफुल होते हैं और गुड लक का नाम देते हैं तो इट मीन्स दैट आई हैवंट पुट एनी एफर्ट एंड out of blue I got this thing. Sometimes it becomes our limited belief कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाता है। On the other hand, हम इतनी एफर्ट नहीं डालते और अपना लिमिटेड बिलीफ बना लेते हैं कि I can't do it. In both cases we need to be persistent. And big if, even after being persistent, we are facing failure. There's an NLP technique very important. In every situation of life, we need to ask 4 to 5 questions forever from ourselves to decide that what is happening and what we can do about it. First question is, what is good about this situation? It's very tough question when you're failed and you need to figure out, is there any good point? Anything good can be figured out which is good for this failure. I know it's a very tough question, but when you ask your unconscious mind, you will get something very positive answer that might you will attempt next time, and you will learn something different, and that will be a better time and better situation to learn something, to achieve something. Then comes, what can be good about this? Number 3, in which context would it be good? Number 4, what do I need to believe to feel good? What could I learn from this situation? What I will do differently next time? So if we look at last 2 questions, what could I learn from this situation and what I will do differently next time, हम अपने आप को मिजरेबल बैड लक के कॉन्सेप्ट के बगैर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे. वी मेक आवर सेल्फ आंसरेबल कि ये फेलियर मेरी ज़िंदगी का फेलियर नहीं है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है. ठीक है, मोस्टली लोग ये पर्सनलाइज कर लेते हैं, आई एम फेलियर, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता, मैं एक सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ. सिचुएशंस को सिचुएशंस की तरह ही लेना चाहिए, ना कि उनको इंटरनलाइज करना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, कि जस्ट लेट्स बी रियलिस्टिक कि जितना डिमांडिंग गोल था उसके अकॉर्डिंगली आपने एफर्ट डाली. And SMART is a concept. SMART is specific, measurable, achievable, realistic and timed. Which means that इन सब चीज़ों में हमने अपने गोल को देखना है कि क्या वो स्पेसिफिक हमने किया हुआ है, मेजरेबल है, रियलिस्टिक है, ये अचीवेबल है हमारे लिए जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम में अपने लिए डिसाइड किया है. सम टाइम हम ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं अपने आप को या अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं. यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ वाइल सेटिंग योर गोल एंड यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट वाइल सेटिंग योर गोल्स. One thing, and in the last I would love to give this message to people कि किसी भी एक सिचुएशन में फेलियर या किसी भी 2-4 सिचुएशंस में फेलियर होने से हम जिंदगी को नहीं हारते हैं, हम अपने आप को नहीं हारना चाहिए. कुछ ना कुछ हम उस सिचुएशन से सीख रहे होते हैं, उन फेलियर से हमें सीखना होता है, इसीलिए वो फेलियर हम फेस कर रहे होते हैं. जब हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी would like to do that thing once again, put another effort, तो नेक्स्ट प्रीवियस से हमारी नेक्स्ट टाइम की लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. विच वी वर मिसिंग सम पॉइंट्स इन द लास्ट अटेम्प्ट, और हमें पता चल जाता है, हम इतना कुछ सीख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट एफर्ट ज़्यादा बेहतर होती है. पीपल हु रिमेन डिप्रेस एंड अपसेट बिकॉज ऑफ देयर फेलियर, दे लिव इन देयर पास्ट. Always live in your present, what you can do about your problems. When you can accept your problems, then you can figure out solution for that specific failure. Everyone has to be a solution oriented person, not the person
आई नो इट्स नॉट दैट मच ईजी, लेकिन एटलीस्ट हमें आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं कि सोल्यूशन ओरिएंटेड, व्हाट कुड बी गुड अबाउट इट, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, तो हम अपने ब्रेन सेल्स को ट्यून कर लेते हैं, इस तरह न्यूरोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं कि वी लुक इनटू सोल्यूशन मोर एज कंपेयर टू प्रॉब्लम.